about listening, this is one of the 4 modules, and we are going to have the real listening also. First of all, we are going to have just a very wrap up, or you can say very brief towards the listening tips. First of all, it is very important to read before you listen. When you have instructions and when you listen any kind of an introduction from their sides, and you are not going to listen the questions, then you have just 10 to 20 seconds. At that point of time, it is advisable just to scan your questions and read as much as you can, so that when you listen, you have a kind of a hint that what you are listening about. Okay. Second is, do not leave your questions, because as you know, in IELTS there is no negative marking. It is advisable to go with the flow and write down as much as you can, and do not leave any question. Always check your spellings. You have 10 minutes to transfer your answers to your answer sheets, so it is very important to check the spellings again and again. Never write your answers too quickly. Sometimes they just change the statement and the answer changes with the statement, so always wait for them, for the listening, to cover another idea, so that it will be easier for you to judge the real answer. Next is, always listen for repeated information. That means, first of all, when they are giving you any kind of an introduction, for example, वो पहले बताते हैं कि आप सुनने वाले हैं एक लेक्चर के बारे में, आप सुनने वाले हैं एक असाइनमेंट के बारे में, तो उसके बाद वही चीज़ वो दोहराते हैं. When then they are doing doubling, just listen once, and when they are doubling the information, at that point of time, try to read the questions, so that it will be easier for you to understand the questions at least. Always use the abbreviations according to IELTS guidelines. That means कि हमेशा कोशिश कीजिए कि आप जो IELTS की guidelines है उसी के according abbreviations लगाएं. Abbreviations होती हैं short forms. Otherwise हम short forms जो है वो avoid करते हैं. ठीक है. Next is, ये आपका टास्क होता है, ये आपका स्ट्रक्चर होता है. सबसे पहले जो टास्क सेक्शन 1 है वो एवरीडे कन्वर्सेशन होती है. दैट मीन्स आप कन्वर्सेशन जो सुनेंगे वो होगी डेली लाइफ से रिलेटेड. 2 या 3 आवाजें जो हैं आप इसमें सुन सकते हैं. सेकेंड सेक्शन ऑफ योर लिसनिंग विल बी अ मोनोलॉग. एक बंदा बोलेगा, सिर्फ वो अपने बारे में कोई बात कह सकता है, पब्लिक के बारे में जो है वो बात कह सकता है, कोई सोशल इशू के बारे में बात कर सकता है. थर्ड सेक्शन इज एक्चुअली द मोस्ट क्राउडेड वन. इसमें आप 4-5 आवाजें भी इकट्ठी सुन सकते हैं. बेसिकली दिस इज एन एकेडमिक सेक्शन. इसमें कोई प्रेजेंटेशन के बारे में, कोई एकेडमिक प्रोजेक्ट के बारे में, कोई असाइनमेंट के बारे में, किसी लेक्चर के बारे में, बेसिकली ऐसी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की जाती हैं. These kind of informations are basically described in section 3, which are related to any syllabus, या जो students हैं वो अपने teachers के साथ बात करते हैं, ऐसी कोई चीज़ें. The last part is a monologue, जिसमें सिर्फ एक इंसान बोलेगा. This is known as the most toughest form, जिसमें आप जो है वो toughest form को माना जाता है ये. और secondly, very difficult one. बेसिकली ये डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि इसमें जो साइंस के टॉपिक्स हैं वो जो हैं वो डिस्क्राइब किए जाते हैं, या रिसर्च के टॉपिक्स डिस्क्राइब किए जाते हैं. दिस इज द रीजन दे फाइंड इट, या कैंडिडेट फाइंड इट क्वाइट डिफिकल्ट. नाउ एनी क्वेश्चन? जगजीत सर? यस मैम. जी बोले. मैम मैं ये पूछा था, आप जैसे अभी आपने कहा ना कि ये एकेडमिक से रिलेटेड है, तो मैम जनरल में कैसा होगा फिर मैम? नहीं, एकेडमिक से रिलेटेड मतलब है कि लिसनिंग सेम होती है. सेक्शन 3 में जो टॉपिक होता है दैट इज एकेडमिक, मतलब स्टडीज के साथ रिलेटेड होता है. वैसे एकेडमिक नहीं होता है, स्टडीज के साथ रिलेटेड होता है. दैट इज व्हाई लिसनिंग एकेडमिक और जनरल की सेम होगी ना मैम? बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम. देयर इज नो डिफरेंस. ठीक है, चलिए. ओके, चलिए. नाउ वी आर गोइंग टू सी द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. देखिए, ऐसी जो टाइप्स हैं, दीज आर नोन एज टेबल्स, दीज आर नोन एज फॉर्म्स. ये जो है दिस इज सेक्शन 1 फॉर्म. ठीक है,
ऐसा एक, जैसे आप कह सकते हैं कि उसे होटल की रिजर्वेशन, किसी हॉस्टल की रिजर्वेशन, किसी क्लब की मेंबरशिप फॉर्म, ऐसा कुछ होता है सेक्शन 1 में। दिस इज नोन एज मैप्स। मैप्स जो है वो बेसिकली किसी ऐसी जगह का होता है जो एक फोर्ट बना हो या कैसल बना हो, ऐसी चीजों का। प्रोसेस डायग्राम्स, हाफ ऑफ द डायग्राम इज गिवन टू यू। आधी जो है वो बनी होती है, आधी आपको पूरी करनी होती है बाय लिसनिंग टू द ऑडियो। दीज आर मैप्स, दीज आर वेरी रेयर, बहुत रेयर आते हैं। बेसिकली मैप्स जो है वो नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ रिलेटेड होते हैं। नाउ अगला सेक्शन जो आता है, दिस इज मैचिंग, जिसमें आपको या तो बिल्डिंग्स के नाम दिए होंगे, एक जगह पे उनके फीचर्स दिए होंगे, बात करेंगे कि कौन सी बिल्डिंग कौन से फीचर्स के साथ है, या किसी बुक्स, किन्हीं बुक्स के नाम दिए होंगे, एक साइड पे उसके ऑथर्स के नाम दिए होंगे। यू हैव टू मैच द ऑथर विद द बुक। अगला है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। दीज आर आल्सो वेरी रेयर, जिसमें क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, आपने सिर्फ एक या दो वर्ड्स में उसके आंसर देना है। These are known as MCQs, that means multiple choice questions, in which you have 3 to 4 options and you have to choose the most suitable one as your answer. The last one is flow chart, जिसमें हर एक इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन की जाती है, एंड इट इज़ वेरी इजी टू गो विद द फ्लो। बहुत इजी होता है इसको ढूंढना, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द लिसनिंग। Make sure you have your pens and notepads with you because we are going to do the listening now. सबसे पहली बात जो मैं अभी आपको कहने वाली हूँ वो ये है कि आप में से कोई भी बीच में नहीं बोलेगा। If you find any kind of a difficulty, I repeat, you are supposed to give me a message in the chat box. अगर आपको आवाज नहीं आ रही, क्लियर नहीं आ रही, तो मेक श्योर आप दोबारा से री एंटर करें, क्लास को लीव कर दीजिए और उसके बाद दोबारा एंटर कीजिए। आई विल एडमिट यू इन द क्लास। और एक और चीज, अगर आपका कंसंट्रेशन लेवल कहीं भी फिकल करता है, दैट मीन्स आपका कंसंट्रेशन लेवल कहीं भी गड़बड़ा जाता है, तो डू नॉट गेट पैनिक। थोड़ी देर वेट कीजिए, उसके बाद ट्राई टू कंसंट्रेट, और जहां पर लिसनिंग चल रही होती है उस सेक्शन पर चले जाइए, ठीक है। चलिए, वी आर गोइंग टू स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके लिए साउंड प्ले करने वाली हूँ, so that you will be able to adjust the volumes of your mobiles and your laptops. Okay, here we go. So questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. Is it audible, everyone? Is it audible, everyone? Audible, Yes, ma'am. चलिए, now we are going to play the sound and the listening. बीच में नहीं हम बोलेंगे। All the best, everyone. Mute yourselves, please. Okay. The test is in 4 sections. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to an answer sheet. Now turn to section 1. Section 1. You will hear a man inquiring in a tourist centre about activities suitable for families. First, you have some time to look at questions 1 to 4. You will see that there is an example that has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Hi, can I help you? I'd like to find out if you have any excursions suitable for families. Sure. How about taking your family for a cruise? We have a steamship that takes passengers out several times a day. It's over 100 years old. The cruise takes place on a steamship. So steamship has been written in the space.
Now we shall begin. You should answer the questions as you listen because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 4. Hi, can I help you? I'd like to find out if you have any excursions suitable for families. Sure. How about taking your family for a cruise? We have a steamship that takes passengers out several times a day. It's over 100 years old. That sounds interesting. How long is the trip? About an hour and a half. And don't forget to take pictures of the mountains. They're all around you when you're on the boat and they look fantastic. Okay. And I assume there's a cafe or something on board? Sure. How old are your children? My daughter's 15 and my son's 7. Right. Well, there are various things you can do once you've crossed the lake to make a day of it. One thing that's very popular is a visit to the country farm. You're met off the boat by the farmer and he'll take you to the holding pens where the sheep are kept. Children love feeding them. My son would love that. He really likes animals. Well, there's also a 40-minute trek round the farm on a horse if he wants. Do you think he'd manage it? He hasn't done that before. Sure, it's suitable for complete beginners. Good. And again, visitors are welcome to explore the farm on their own, as long as they take care to close gates and so on. There are some very beautiful gardens along the side of the lake which also belong to the farm. They'll be just at their best now. You could easily spend an hour or 2 there. Okay, well, that all sounds good. And can we get lunch there? You can, and it's very good, though it's not included in the basic cost. You pay when you get there. Right. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 5 to 10. Now listen and answer questions 5 to 10. So, is there anything else to do over on that side of the lake? Well, what you can do is take a bike over on the ship and then go on a cycling trip. There's a trail there called the Back Road. You could easily spend 3 or 4 hours exploring it, and the scenery's wonderful. They'll give you a map when you get your ticket for the cruise. There's no extra charge. What's the trail like in terms of difficulty? Quite challenging in places. It wouldn't be suitable for your 7-year-old. It needs someone who's got a bit more experience. Well, my daughter loves cycling, and so do I, so maybe the 2 of us could go, and my wife and son could stay on the farm. That might work out quite well. But we don't have bikes here. Is there somewhere we could rent them? Yes, there's a place here in the city. It's called Ratcheson's. I'll just make a note of that. How do you spell it? Ratchesons. It's just by the cruise ship terminal. Okay. You'd also need to pick up a repair kit for the bike from there to take along with you, and you'd need to take along a snack and some water. It'd be best to get those in the city. Fine. That shouldn't be a problem. And I assume I can rent a helmet from the bike place. Sure, you should definitely get that. It's a great ride, but you want to be well prepared because it's very remote. You won't see any shops round there or anywhere to stay, so you need to get back in time for the last boat. Yeah. So what sort of prices are we looking at here? Let's see. That'd be 1 adult and 1 child for the cruise with farm tour. That's $117, and an adult and a child for the cruise only, so that's $214 altogether. Oh, wait a minute. How old did you say your daughter was? 15. Then I'm afraid it's $267 because she has to pay the adult fare, which is $75, instead of the child fare, which is $22.
Sorry about that. That's okay. So how do we find out? That is the end of section 1. You now have half a minute to check your answers. Now turn to section 2. Section 2. You will hear a restaurant manager talking to a small group of new staff who are starting work as kitchen assistants in a restaurant. First, you have some time to look at questions 11 to 16. Now listen carefully and answer questions 11 to 16. Good morning, everyone. My name's Joy Parkins, and I'm the restaurant manager. And I understand that none of you have had any previous experience as kitchen assistants. Well, you might be feeling a bit nervous now, but most of our kitchen assistants say they enjoy the work. OK, they might get shouted at sometimes, but it's nothing personal. And they're pleased that they have so many different things to do, which means they never get bored. And I'll tell you straight away that if you do well, we might think about moving you up and giving you some more responsibility. Right, well, you've all shown up on time, which is an excellent start. Now, I'm glad to see none of you have unsuitable footwear, so that's good. You need to be careful as the floors can get very wet and slippery. Those of you with long hair have got it well out of the way, but some of you'll need to remove your rings and bracelets. Just put them somewhere safer today, and remember to leave them at home tomorrow, as they can be a safety hazard. Now, it's going to be a busy day for you all today. We don't have any tables free for this evening, and only a few for lunch. Fortunately, we've got our head chef back. He was away on holiday all last week, which meant the other chefs had extra work. Now, I'll tell you a bit more about the job in a minute, but first, some general regulations. For all of you, whatever your age, there's some equipment you mustn't use until you've been properly trained, like the waste disposal system, for example, for health and safety reasons. Then I think there are 2 of you here who are under 18. That's Emma and Jake, isn't it? Right. So for you 2, the meat slicer is out of bounds, and of course none of you are allowed to use the electric mixer until you've been shown how it works. Now, you may have heard that this can be a stressful job, and I have to say that can be true. You'll be working an 8-hour day for the first week, though you'll have the chance to do overtime after that as well if you want to. But however long the hours are, you'll get a break in the middle. What you will find is that you're on your feet all day long, lifting and carrying. So, if you're not fit now, you soon will be. You'll find you don't have much chance to take it easy. When someone tells you to do something, you need to do it straight away. But at least we do have a very efficient air conditioning system compared with some kitchens.
Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 17 to 20. Now listen and answer questions 17 to 20. Now, let me tell you about some of the people you need to know. So, as I said, I'm Joy Parkins, and I decide who does what during the day and how long they work for. I'll be trying to get you to work with as many different people in the kitchen as possible, so that you learn while you're on the job. One person whose name you must remember is David Field. If you injure yourself at all, even if it's really minor, you must report to him, and he'll make sure the incident is recorded and you get the appropriate treatment. He's trained to give basic treatment to staff himself, or he'll send you off somewhere else if necessary. Then there's Dexter Wills. He's the person you need to see if you smash a plate or something like that. Don't just leave it and hope no one will notice. It's really important to get things noted and replaced, or there could be problems later. And finally, there's Mike Smith. He's the member of staff who takes care of all the stores of perishables. So if you notice we're getting low in flour or sugar or something, make sure you let him know so he can put in an order. Okay, now the next thing we need to cover. That is the end of section 2. You now have half a minute to check your answers. Now turn to section 3. Section 3. You will hear two students called Trudy and Stuart, who are both studying to be librarians, discussing a paper that they are going to write together. First, you have some time to look at questions 21 to 23. Now listen carefully and answer questions 21 to 23. OK, Stuart, we need to start planning our paper on public libraries. Have you thought of an angle yet? Well, there's so much we could look into. How libraries have changed over the centuries, for instance, or how different countries organise them. What do you think, Trudy? Maybe we should concentrate on this country and try and relate the changes in libraries to external developments, like the fact that far more people can read than a century ago, and that the local population may speak lots of different languages. We could include something about changes in the source of funding too. Yes, but remember we're only supposed to write a short paper, so it's probably best if we don't go into funding in any detail. Right. Well, shall we just brainstorm a few ideas to get started? OK. We obviously need to look at the impact of new technology, particularly the internet. Now that lots of books have been digitalised, people can access them from their own computers at home. And if everyone did that, libraries would be obsolete. Yes. But the digitalised books that are available online for free are mostly out of copyright, aren't they? And copyright in this country lasts for 70 years after the author dies. So you won't find the latest bestseller or up-to-date information. That's an important point.
Anyway, I find it hard to concentrate when I'm reading a long text on a screen. I'd much rather read a physical book. And it takes longer to read on a screen. Oh, I prefer it. I suppose it's just a personal preference. I expect the libraries will go on evolving in the next few years. Some have already become centres where community activities take place, like local clubs meeting there. I think that'll become even more common. I'd like to think so, and that they'll still be serving their traditional function, but I'm not so sure. There are financial implications after all. What I'm afraid will happen is that books and magazines will all disappear and there'll just be rows and rows of computers. They won't look anything like the libraries we're used to. Well, we'll see. Before you hear the rest of the discussion, you have some time to look at questions 24 to 30. Now listen and answer questions 24 to 30. I've just had an idea. Why don't we make an in-depth study of our local public library as background to our paper? Yes, that'd be interesting, and raise all sorts of issues. Let's make a list of possible things we could ask about, then work out some sort of structure. For instance, we could interview some of the staff and find out whether the library has its own budget or if that's controlled by the local council. And what their policies are. I know they don't allow food, but I'd love to find out what types of noise they ban. There always seems to be a lot of talking, but never music. I don't know if that's a policy or it just happens. I've often wondered. Then there are things like how the library is affected by employment laws. I suppose there are rules about working hours, facilities for staff and so on. Right. Then there are other issues relating to the design of the building and how customers use it. Like, what measures does the library take to ensure their safety? They'd need floor coverings that aren't slippery, and emergency exits, for instance. Oh, and another thing, there's the question of the kind of insurance the library needs to have, in case anyone gets injured. Yes, that's something else to find out. You know something I've often wondered? What's that? Well, you know they've got an archive of local newspapers going back years. Well, next to it, they've got the diary of a well-known politician from the late 19th century. I wonder why it's there. Do you know what his connection was with this area? No idea. Let's add it to our list of things to find out. Oh, I've just thought, you know, people might ask in the library about local organisations, like sports clubs. Well, I wonder if they keep a database, or whether they just look online. Right. I quite fancy finding out what the differences are between a library that's open to the public and one that's part of a museum, for example. They must be very different. Then something else I'd like to know is... That is the end of section 3. You now have half a minute to check your answers. Now turn to section 4. Section 4. You will hear part of a lecture for business students about business values. First, you have some time to look at questions 31 to 40.
Now listen carefully and answer questions 31 to 40. In public discussion of business, we take certain values for granted. Today, I'm going to talk about 4 of them: collaboration, hard work, creativity, and excellence. Most people would say they're all good things. I'm going to suggest that's an oversimple view. The trouble with these values is that they're theoretical concepts, removed from the reality of day-to-day business. Pursue values by all means, but be prepared for what may happen as a result. They can actually cause damage, which is not at all the intention. Business leaders generally try to do the right thing, but all too often the right thing backfires if those leaders adopt values without understanding and managing the side effects that arise. The values can easily get in the way of what's actually intended. Okay, so the first value I'm going to discuss is collaboration. Let me give you an example. On a management training course I once attended, we were put into groups and had to construct a bridge across a stream using building blocks that we were given. The rule was that everyone in the team had to move at least one building block during the construction. This was intended to encourage teamwork. But it was really a job best done by one person. The other teams tried to collaborate on building the structure and descended into confusion, with everyone getting in each other's way. Our team leader solved the challenge brilliantly. She simply asked everyone in the team to move a piece a few centimetres to comply with the rule, and then let the person in the team with an aptitude for puzzles like this build it alone. We finished before any other team. My point is that the task wasn't really suited to team working, so why make it one? Teamwork can also lead to inconsistency, a common cause of poor sales. In the case of a smartphone that a certain company launched, one director wanted to target the business market, and another demanded it was aimed at consumers. The company wanted both directors to be involved, so gave the product a consumer-friendly name, but marketed it to companies. The result was that it met the needs of neither group. It would have been better to let one director or the other have his way, not both. Now, industriousness, or hard work. It's easy to mock people who say they work hard. After all, a hamster running around in a wheel is working hard and getting nowhere. Of course, hard work is valuable, but only when properly targeted. Otherwise, it wastes the resources that companies value most, time and energy, and that's bad for the organisation. There's a management model that groups people according to 4 criteria: clever, hard-working, stupid, and lazy. Here, lazy means having a rational determination not to carry out unnecessary tasks. It doesn't mean trying to avoid work altogether. Most people display 2 of these characteristics, and the most valuable people are those who are both clever and lazy. They possess intellectual clarity, and they don't rush into making decisions. They come up with solutions to save the time and energy spent by the stupid and hard-working group. Instead of throwing more man-hours at a problem, the clever and lazy group looks for a more effective solution. Next, we come to creativity. This often works well. Creating an attention-grabbing TV commercial, for example, might lead to increased sales. But it isn't always a good thing. Some advertising campaigns are remembered for their creativity without having any effect on sales. This happened a few years ago with the launch of a chocolate bar. Subsequent research showed that plenty of consumers remembered the adverts, but had no idea what was being advertised.
The trouble is that the creator derives pleasure from coming up with the idea and wrongly assumes the audience for the campaign will share that feeling. A company that brings out thousands of new products may seem more creative than a company that only has a few, but it may be too creative and make smaller profits. Creativity needs to be targeted to solve a problem that the company has identified. Just coming up with more and more novel products isn't necessarily a good thing. And finally, excellence. We all know companies that claim they strive for excellence, but it takes a long time to achieve excellence. In business, being first with a product is more profitable than having the best product. A major study of company performance compared pioneers, that is, companies bringing out the first version of a particular product, with followers, the companies that copied and improved on that product. The study found that the pioneers commanded an average market share of 29%, while the followers achieved less than half that, only 13%, even though their product might have been better. Insisting on excellence in everything we do is time-consuming, wastes energy, and leads to losing out on opportunities. Sometimes second-rate work is more worthwhile than excellence. Make sure it's excellent sounds like a good approach to business, but the just get started approach is likely to be more successful. That is the end of section 4. Please match your answers, everyone. You have 5 minutes. Please match your answers. Have you done with the matching of your answers, everyone? Done, or you need 1 more minute? Okay, everyone. Now, I'm getting the messages that we are done. Any kind of a question or query regarding the listening questions from your sides? Yes, ma'am. Yes, Jagdeep sir. Ma'am, what is the meaning of inconsistence?
इनकंसिस्टेंस होता है जहां पर कंसिस्टेंस ना हो, दैट मीन्स कभी बढ़ गई कोई चीज़ कभी कम हो गई। फॉर एग्जांपल डेडिकेशन के लिए यूज़ करें अगर हम, तो इंसान कभी हार्ड वर्क करने लग गया, कभी उसका हार्ड वर्क जो है वो लूज पड़ गया। इनकंसिस्टेंस होता है एक जैसा ना चलना, उसमें कोई ना कोई चेंजेस आते रहना, दैट इज कंसिस्टेंट ना होना, दैट इज इनकंसिस्टेंस। ओके मैम। ओके, नाउ वी आर मूविंग आवर फोकस टुवर्ड्स राइटिंग्स। अभी हम राइटिंग टास्क 2 करने वाले हैं। As this is your last class, everyone, I will try कि मैं आपके questions के answer दे पाऊँ. Okay, just give me 1 second. I advise you all कि आपके जो भी questions और queries हैं regarding writing especially, because writing जो है वो सबसे difficult मानते हैं जो candidates हैं, कोई भी आपका क्वेश्चन और क्वेरी है तो आप अपना लिख के रखिए। इन द लास्ट ऑफ द सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरी क्वेरी दैट इज रिगार्डिंग राइटिंग, ठीक है। और एनी अदर क्वेश्चन और क्वेरी आपका कोई भी चारों मॉड्यूल्स में से आईएलटीएस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन और क्वेरी है आप सेशन के एंड में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू हैव टास्क 2। दिस इज अ टास्क 2। टुडे हम कोई भी जो है वो डिस्क्रिप्शंस नहीं करेंगे, ऑलरेडी हम 9 दिन से सभी डिस्क्रिप्शंस कर रहे हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो देखिए ये है, गवर्नमेंट शुड स्पेंड मोर मनी ऑन एजुकेशन देन ऑन रिक्रिएशन एंड स्पोर्ट्स। जो गवर्नमेंट है उसको जो ज्यादा टाइम है वो स्पेंड करना चाहिए, जस्ट अ सेकेंड, जो ज्यादा टाइम है वो स्पेंड करना चाहिए रिक्रिएशनल जो ज्यादा टाइम है वो स्पेंड करना चाहिए एजुकेशन पे, ठीक है। हम टाइम ने मनी, सॉरी, मनी जो है वो ज्यादा सॉरी, मनी जो है वो स्पेंड करनी चाहिए एजुकेशन पे, स्पोर्ट्स या किसी और रिक्रिएशनल जो चीज है उसके अलावा। डू यू अग्री और डिसअग्री? क्या आप अग्री करते हैं या डिसअग्री करते हैं? ठीक है, टू व्हाट एक्सटेंड मैं नहीं चाहती देना आपको, टू व्हाट, कितनी बार हम यही कर चुके हैं, टू व्हाट एक्सटेंड हम डू यू अग्री और डिसअग्री करेंगे, ठीक है। अभी क्या है, जो गवर्नमेंट्स है उनके पास एक लिमिटेड बजट है, राइट। वो जो बजट है वो एलोकेट किया जाता है कि इतना परसेंट जो बजट है वो इस फील्ड को जाना चाहिए, इतना इस फील्ड को जाना चाहिए। तो स्टेटमेंट जो है वो ये कहती है कि ज्यादा मनी है जो वो एजुकेशन को देना चाहिए एज कंपैरेटिव टू रिक्रिएशनल और स्पोर्ट्स को, ठीक है। रिक्रिएशन में क्या क्या आता है, आप में से कोई बता सकता है मुझे? स्पोर्ट्स तो सभी को पता है, रिक्रिएशन में क्या क्या आता है? जैसे मैम इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज। और कुछ? पलक कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप इस चीज को? ओके, एनी अदर पर्सन? हाँ जी पलक। हाँ हाँ बोलिए। जैसे आजकल के हॉस्पिटल्स वगैरह में ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है, और जैसे एजुकेशंस में जैसे स्मार्ट क्लासेस वगैरह, दैट्स अ पॉइंट। ओके, और कुछ? और कुछ? मैम कुछ एंजॉयमेंट के लिए बनाना, जैसे ठीक है, जैसे क्या बनाती है गवर्नमेंट हमारे एंजॉयमेंट के लिए? स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स मैम, जैसे अम्यूजमेंट पार्क्स। यस, म्यूजियम्स बना देने, अम्यूजमेंट पार्क्स बना देने, ऐसी चीजें जो हैं वो रिक्रिएशन में आती हैं, ठीक है। यस मैम। तो स्टेटमेंट ये कहती है कि गवर्नमेंट को एजुकेशन सेक्टर को ज्यादा पैसे देने चाहिए एज कंपैरेटिव टू कि ऐसी कोई जगह बना दी जाए
म्यूजियम्स बना दिए, पार्क्स बना दिए, स्टैचूज बना दिए, ठीक है, या किसी स्पोर्ट्स के लिए। यस दिलवीर तूर, यू रेज योर हैंड, यू वांट टू से समथिंग? दादाजी मंडे ले लेना मंडे, एनीवेज ले लेना मंडे आपको कर दूंगा पक्का, नंबर दे दूंगा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अग्री और डिसअग्री, ठीक है, हम दोनों चीजें जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं, राइट? चलिए, नाउ वी आर मूविंग आवर फोकस टुवर्ड्स द अग्रीमेंट। अभी आप अपने अपने हैंड्स रेज करेंगे एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द पॉइंट्स। क्यों जो गवर्नमेंट है उसको एजुकेशन सेक्टर को ज्यादा जो पैसे हैं वो देने चाहिए, इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? यस, रेज योर हैंड्स प्लीज। क्या क्या क्यों रीजंस है? एम्प्लॉयमेंट है, एक अवेयरनेस होगी अगर जो एजुकेशन है वो ज्यादा अच्छे से मिल जाए, ठीक है, ज्यादा लोगों को अवेयर एजुकेशन मिलेगी, ज्यादा पैसे जो गवर्नमेंट है वो लगाएगी, तो कहीं ना कहीं हमारा सोशल स्टेटस ग्लोबली अच्छा हो जाएगा। यस जशनप्रीत? जैसे मैम क्योंकि जो भी न्यू जनरेशन है उस पे हमारा फ्यूचर स्टैंड है, क्योंकि मोस्टली कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि हमारी जो भी है ना जनरेशन है जो वो स्टडी करेंगी वो कुछ बनेंगी, तो उन पे डिपेंड है सारी। बिल्कुल, एजुकेशन जो है वो फाउंडेशन है। यस मैम। ठीक है, अगर एजुकेशन अच्छी नहीं होगी तो जो सिटीजन्स हमारे सामने आएंगे, दो सिटीजन्स आर नॉट हैविंग द क्वालिटी in their life. Yes, Oppo 57, sorry, Oppo F7. May I know your name, please? Ma'am, my name is Arun. हाँ जी, अरुण सर बोलिए। मैम लिटरेसी रेट इंक्रीज होगा? लिटरेसी रेट जो है, सॉरी, लिटरेसी रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल सही, राइट। और कुछ और एजुकेशन का क्या फायदा है? यस जशनप्रीत? मैम बेटर अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज जैसे हमारे पास एजुकेशन होगी तो हम फिर ही बेटर अपॉर्चुनिटीज गेन कर सकते हैं ना, बहुत सारी नॉलेज गेट कर सकते हैं, तो ऐसे अवेयरनेस होगी सोसाइटी में। यस मैम। ओके, ओके, एनी अदर पॉइंट? मैम एम्प्लॉयमेंट विल बी इंक्रीज? एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाएगा, बेटर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। राइट। एंड मैम पॉवर्टी खत्म होगी। बिल्कुल ठीक, डिक्रीज इन पॉवर्टी, राइट। एनी अदर पॉइंट? मैम डिस्क्रिमिनेशन विल बी रिड्यूस्ड? कैसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अगर मैम सारे मींस कि सभी एजुकेटेड होंगे तो कोई भी इसमें मतलब कि पुअर और रिच नहीं होगा, मींस कि सभी एम्प्लॉयमेंट अगर इक्वल मिलेगी तो उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा बिटवीन द रिच एंड पुअर, इक्वालिटी आ जाएगी, ठीक है, ओके। यस दिलवीर तूर? Dilveer Toor, you raised your hand. You want to say something? Okay. Yes, Keval sir? Any country get best citizen? कैसे कैसे कैसे? कोई कंट्री अच्छा नागरिक में मिलेगा।
नहीं, वो हम जो चीज आप कह रही हैं ना, वो हम यहाँ पर आएंगे लिटरेसी रेट और अवेयरनेस इन द सोसाइटी में, कि अगर सोसाइटी है जो एजुकेटेड होगी तो उसमें अवेयरनेस होगी और जो सिटीजन्स हैं वो अच्छे होंगे आगे जाके, वो इसमें एक्सप्लेन करेंगे हम, ठीक है? यस अरुण सर? When people can easily imbibe the knowledge about the outer world. ओके, कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप उसको? मैम अगर वो मीन्स ज़्यादा एजुकेटेड रहेंगे तो उनको मीन्स कि आउटर वर्ल्ड के बारे में मैम नॉलेज ज़्यादा होएगी एज कम्पेयर टू द मैम अनएजुकेटेड पीपल. ओके, राइट. एनी अदर पॉइंट? एनी अदर पॉइंट जो आपके दिमाग में आ रहा है? अगर आप अग्री करते हैं इस चीज से कि हाँ जी, एजुकेशन पे जो गवर्नमेंट है उसको ज्यादा पैसे खर्च करने चाहिए एज कंपैरेटिव टू रिक्रिएशन. चलिए, अभी हम दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू लिखते हैं. दैट मीन्स कि स्पोर्ट्स को और रिक्रिएशन को इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, राइट? ऐसी कोई जो है वो नेसेसिटी नहीं होनी चाहिए कि एजुकेशन को ही पैसे मिले, क्योंकि जितनी इंपॉर्टेंस एजुकेशन रखती है उतनी स्पोर्ट्स भी रखती हैं. ये हम डिस्क्राइब करने वाले हैं, राइट? हाँ जी, बोलिए, क्या पॉइंट्स हैं आपके? नॉट ओनली एजुकेशन इज नेसेसरी बट आल्सो हेल्थ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. हेल्थ की बात नहीं कर रहे हम रिक्रिएशन एंड स्पोर्ट्स की बात करेंगे सर. हाँ, यस मैम, स्पोर्ट्स के थ्रू मैम हेल्थ होएगी उनकी इम्प्रूव. वो स्पोर्ट्स की बात नहीं कर रहे हम. जो हमारे जैसे मैचेस होते हैं, जो क्रिकेटर्स हैं या टीम्स हैं, उनकी बात करते हैं. उनको स्पॉन्सर करती है ना जो गवर्नमेंट है, या जो प्लेयर्स हैं प्रोफेशनल प्लेयर्स, हम सिर्फ उसकी बात कर सकते हैं ना इसमें. गवर्नमेंट आम बंदे की स्पोर्ट्स को थोड़ी ना. हाँ जी, इकोनॉमी ऑफ द नेशन विल बी इम्प्रूव मैम, इंक्रीज, सॉरी. ओके, इकोनॉमी विल इम्प्रूव, इंक्रीज, इम्प्रूव कर देते हैं. ओके, ओके. एनी अदर पॉइंट, एनीवन? यस केवल सर? Improve our skill, sport related. Skill for? Improve our skill for? कोई क्रिकेटर बनना चाहता है तो अच्छा क्रिकेटर बनता है. नहीं, फिर उसमें गवर्नमेंट को पैसे क्यों खर्च करने चाहिए? उस चीज के साथ कैसे रिलेट करेंगे आप? गवर्नमेंट कोई कॉम्प्लेक्स में, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ही नहीं होता तो आप कहेंगे फाइनेंशियल हेल्प टू द एस्पिरेंट्स, ठीक है? ऐसे एक्सप्लेन करेंगे आप कि ये गवर्नमेंट की जो है वो ड्यूटी बनती है कि अगर आगे जाके कोई रिप्रेजेंट करने वाला है अपनी ही कंट्री को तो उसको हेल्प करे इन स्पोर्ट्स. यस प्रियंका, यू रेज योर हैंड. Yes, Priyanka, you want to say something? Yes, ma'am. Proud for national people, ma'am. Nation जो है वो हमारा proud करेगा उससे अगर होता है तो. Okay, आप कह सकते हैं कि रिप्रेजेंट करती हैं स्पोर्ट्स, रिप्रेजेंट द नेशन, ठीक है, ग्लोबली. इसलिए उनको भी हक बनता है, ठीक है? उनको भी हक बनता है कि उनको भी जो है वो एक फंड मिले. ओके, यस, यस रमन. Raman, you raised your hand. You want to say something? Okay. Kamaljeet? मैम स्पोर्ट्स ਦੇ थ्रू ਹੋਰ नेशन ਦੇ ਨਾਲ बॉन्डिंग बनती है अच्छी. कैसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? मैम जब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए इसमें? गवर्नमेंट का क्या रोल है? मैम ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਨੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਸ ਚ ਦੋ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨੇ,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਬੌਂਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹ लर्न करते मैम एक दूसरे से समथिंग। अच्छा, आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे फिर? लिखेंगे क्या यहाँ पे हम? डोंट नो। ओके, हम कह सकते हैं इंटर कंट्री, ठीक है, बॉन्ड या बॉन्डिंग्स के लिए स्पोर्ट्स जो है वो एक मीडियम है, मीडियम बन जाते हैं। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। यस अरुण सर? मैम मेरे पास 2 पॉइंट्स है मैम। बोलिए मैम। एक तो प्लेयर जो होंगे मैम हेल्पिंग नेचर उनमें इंक्रीज होगा। कैसे? गवर्नमेंट पैसे देगी तो हेल्पिंग कैसे इंक्रीज हो जाएगी, बताइए मैम। अगर मैम गवर्नमेंट पैसे पे करती है मैम, टीम में प्लेयर खेलते हैं मैम, अगर टीम में खेलते तो मैम ऑब्वियस है कि वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे इजीली मैम, उनमें की हेल्पिंग नेचर इम्प्रूव होगा मैम। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है? एंड मैम सेकंड है कि वो अगर गवर्नमेंट पैसा पे करती है तो मैम वो इनकरेज करेंगे यंगस्टर को कि वो ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व हो स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज में। सेकंड पॉइंट जो है वो वैलिड है। इसको हम लिखेंगे कि अगर जो गवर्नमेंट है वो एक फंडिंग प्रॉपर देती है, ठीक है, उनको फॉर अप, तो अपकमिंग जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको जो है वो कहीं ना कहीं इंकरेजिंग फैक्टर होता है कि यस हमारा भी जो है वो कोई फ्यूचर बन सकता है इस कंट्री में। ठीक है, ये वाला पॉइंट हम एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड वाला इनवैलिड था। ओके, एनी अदर पॉइंट फ्रॉम योर साइड्स? मैम एक की पब्लिक के एंटरटेनमेंट में हेल्प होगी स्पोर्ट्स से। कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मैम यही कि जैसे हमारे मैचेस होते हैं तो वो पब्लिक को, जैसे T20 मैचेस होते हैं तो बहुत एंटरटेन करते हैं, पब्लिक देखना पसंद करती है। ओके, ठीक है, लिख दिया हमने पब्लिक एंटरटेनमेंट। और कुछ और दो पॉइंट? हाँ जी। स्पोर्ट्स आर मोर बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। नहीं, वो हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते, हम सिर्फ गवर्नमेंट के साथ रिलेटेड चीजें लिख सकते हैं। रिक्रिएशनल तो आपने कुछ कहा ही नहीं है। रिक्रिएशन के बारे में आपके क्या विचार हैं? किसी ने भी रिक्रिएशन की बात नहीं की। आपको नहीं लगता कि अगर कोई म्यूजियम्स या ऐसा कुछ बनाती है गवर्नमेंट तो एक रिकॉग्निशन मिलती है? यस मैम, विद द हेल्प ऑफ रिक्रिएशनल कोई भी एक्टिविटी होती है उससे हमको नॉलेज गेन होती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ बेटे, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा म्यूजियम बनाया वर्ल्ड लेवल का, तो रिकॉग्निशन होती है कि यहाँ पर जो है वो एक ऐसा म्यूजियम जो है वो, या एक ऐसा स्टैचू जो है वो बना है, एक ऐसा फाउंटेन लगाया है गवर्नमेंट ने, या एक ऐसी बिल्डिंग बनाई है गवर्नमेंट ने जिसमें ये सारी चीजें जो हैं वो बनी है। दैट इज अ वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन। रिक्रिएशनल चीजों से ऐसा कुछ होता है। और कोई पॉइंट किसी का रिक्रिएशन को लेके? यस परवीन? Yes. Government provide free activities like gym. कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे इस चीज को? मैम जिद्दां ਆਪਾਂ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ फ्री एक्टिविटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करदी है। अच्छा, तो ਇਹ ਦੀ रिक्रिएशन एंड स्पोर्ट्स ना होगा? नहीं, अगर हम ये कहें कि गवर्नमेंट जो है, आपकी तरह आपका कहना ये है कि गवर्नमेंट को रिक्रिएशनल एक्टिविटीज जो है उनको बढ़ावा देना चाहिए, लोगों के लिए फ्री जिम्स बना देने चाहिए। नहीं मैम, फ्री एक्टिविटीज मतलब लेजर टाइम दिंदी है गवर्नमेंट। अच्छा, कौन सी गवर्नमेंट दे रही है सर आपकी तरफ से? हाँ ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨ ਪਟਿਆਲਾ ਲੀਲਾ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਰਕ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਮ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। वो पब्लिक एंटरटेनमेंट में आ जाएगा।
This will Okay, come under, ma'am. you can give example of Leela Bhavan in this. Okay, ma'am. ठीक है, हाँ जी. Any other point, anyone? Ma'am, people will be aware about the history, culture and their मैम कल्चर और उससे हिस्ट्री से मैम कनेक्टेड रहेंगे अगर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रहेंगी मैम. Okay, good point. Awareness about the society, पहले तो सोसाइटी की, ठीक है, फिर कल्चर की, फिर ट्रेडिशन की. इन चीज़ों के बारे में पता चलेगा. रिक्रिएशनल जो मॉन्यूमेंट्स या रिक्रिएशनल बिल्डिंग्स जो है वो बनाई जाती हैं, तो आप इसमें एग्जाम्पल देंगे म्यूजियम्स की, ठीक है, तब आपका ये पॉइंट है जो वो वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं होगा. एनी अदर पॉइंट, एनीवन? और कोई पॉइंट जो आप एक्सप्लेन करना चाहें इसमें? है कोई ऐसा पॉइंट? मैम इट मे बिकम द सोर्स ऑफ अट्रैक्शन. हाँ, वो रिकॉग्निशन वर्ल्ड वाइड में आ जाएगा. इसमें आप इनकम भी लिख सकते हैं, सोर्स ऑफ रेवेन्यू. ओके मैम. रेवेन्यू भी ऐड कर सकते हैं कि गवर्नमेंट को इससे रेवेन्यू भी आएगा, ठीक है, रिक्रिएशनल जो चीजें हैं. चलिए, मैम इसमें भी हम बोल सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट विल बी इंक्रीज. कैसे कैसे मैम बोलेंगे, अगर वो बताइए. रिक्रिएशनल एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट्स को मैनेज करते हैं तो मैम मान लो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए तो मैम उनको इंडिविजुअल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी. नहीं, आप एग्जाम्पल देना चाहे दे सकते हैं, वैसे दिस इज अ वीक पॉइंट. आप दे सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है. चलिए, anyone who want to have a screenshot of this, please take it by now because I'm going to clear everything in just 1 or 2 seconds. अगर आप लेना चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट तो you're most welcome to have a screenshot of this brainstorming session. Okay. Now we are moving towards the solution. देखिए क्या कहा है उन्होंने कहा है कि सबसे पहले almost all governments across the globe have a yearly budget to distribute money for various activities. तकरीबन हर देश की जो गवर्नमेंट है उसका एक ईयरली बजट होता है, एक साल का बजट होता है, जिसमें वो अपने बजट को, पैसे को डिवाइड करती है अलग अलग एक्टिविटीज के लिए. आई एग्री दैट गवर्नमेंट शुड एलोकेट अ हायर बजट फॉर एजुकेशन. मैं ये एग्री करता हूँ या करती हूँ कि गवर्नमेंट जो है उसको बजट दे, हायर बजट जो है वो एजुकेशन को देना चाहिए एज कंपेयर टू रिक्रिएशन एंड स्पोर्ट्स. रिक्रिएशन और स्पोर्ट्स की जगह पे कंपैरेटिवली. दिस कैन बी प्रूवन बाय एनालाइजिंग द अनएम्प्लॉयमेंट क्राइम रेट ऑफ अ नेशन. ये प्रूव होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट और क्राइम रेट कितना है किसी भी कंट्री का, इस पे डिपेंड करता है. द रिस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू इज इलैबोरेटेड इन द सब्सिक्वेंट पैराग्राफ्स. मेरा जो अग्री वाला रिस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू है वो हम आने वाले बॉडी पैराग्राफ्स में एक्सप्लेन करने वाले हैं. टू इनिशिएट द आर्ग्यूमेंट, अगर हम आर्ग्यूमेंट को शुरू करें, if more people are educated in a country, it is apparent that the employment rate of that nation will be high. Employment rate high होगा, जितने लोग ज़्यादा पढ़ेंगे उतने उनको नौकरियां ज़्यादा मिलेंगी, as there are a lot of skilled employments available throughout the world. क्योंकि उनकी स्किल्स जो हैं वो बड़ी होंगी, उनको स्किल्स एम्प्लॉयमेंट मिल जाएंगी, किसी भी संसार के कोने में वो चले जाएं. But to have many people educated, the government should provide good education system. अगर हम ये कहें कि लोगों को बहुत ज़्यादा एजुकेट करना है तो गवर्नमेंट को अपना एजुकेशन सिस्टम को अच्छा बनाना होगा, बट विच इज़ अफोर्डेबल बाय द सिटीजन्स, जो कि उस देश के सिटीजन्स के बजट में हो, उनके अपने बजट में हो, अफोर्डेबल हो उनके लिए. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल है, एज पर द रिपोर्ट पब्लिश्ड इन वीक मैगजीन. ये एक मैगजीन का नाम है, इसमें एक पब्लिश हुई है जो रिपोर्ट है. देखिए यहाँ पर हम क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्ड्स यूज कर रहे हैं. ड्यूरिंग अगस्त 2015, ये अगस्त 2015 में ये जो रिपोर्ट है वो सामने आई है. अमेरिका हैज वेरी लेस अनएम्प्लॉयमेंट रेट
as the government provides best quality education to the citizens at a very minimal fee. अमेरिका जो है उसका सब बहुत ही ज़्यादा कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो बेस्ट एजुकेशन दे रही है बहुत ही थोड़े पैसों में. Thus, it is obvious that the government should focus on spending more on the education system. इसलिए ये कहा जाता है, ये प्रूफ होता है कि गवर्नमेंट को एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उस पर स्पेंड करना पड़ेगा. The recreation and sports activities are also important for people, but the education has far better importance. Sports और recreation भी important है, लेकिन education जो है वो सबसे ज़्यादा important रखती है किसी भी बंदे की लाइफ में. अगली चीज़ आइए. As the society has more social knowledge, the crime rate will be reduced. अगर सोसाइटी में एक एजुकेशन है तो सोशल नॉलेज भी होगी, जिससे क्या होगा, क्राइम रेट गिर जाएगा. This is due to the fact that education creates a positive mentality among the people. Education जो है वो एक positive mentality बनाती है इंसान में. For instance, यहाँ पर भी एग्जाम्पल है. As per the BBC, British Broadcast Channel report telecasted on January 2015, Nigeria has a crime rate which is 20 times more than USA. नाइजीरिया का, दैट इज अ पार्ट ऑफ अफ्रीका, नाइजीरिया का एक क्राइम रेट अगर हम बात करें 20% ज़्यादा है, 20 गुना ज़्यादा है यूएस के क्राइम रेट से. Therefore, it is the responsibility of the governments to ensure that citizens are educated by providing adequate infrastructure. ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट्स की कि वो सिटीजन्स को एक प्रॉपर एजुकेशन दें ताकि उनको एक प्रॉपर सिनेरियो, एक प्रॉपर लाइफ के बारे में पता चल सके. इन एडिशन टू दैट, गवर्नमेंट शुड इवन मेक द सेकेंडरी एजुकेशन फ्री एंड मैंडेटरी. गवर्नमेंट जो है उनको +2 तक सेकेंडरी एजुकेशन, 10th तक सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो कंपल्सरी कर देनी चाहिए, फ्री कर देनी चाहिए. ऐसा करने से एक बेसिक एजुकेशन सिस्टम जो है वो खड़ा हो जाएगा. दैट विल बी द गुड फाउंडेशन ऑफ द सोसाइटी. हेंस इट इज वेरी क्लियर दैट गवर्नमेंट्स मस्ट एलोकेट अ हायर बजट फॉर एजुकेशन. इससे हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट को एलोकेट करना ही पड़ेगा एक अच्छा बजट इफ दे वांट अ गुड फाउंडेड society in their nation. To encapsulate, that means in conclusion, by analyzing how allocating more money for education can increase employment rate and make the earth a safer place to live, it is very essential that government should allocate a higher percentage of the budget on education. अगर हमें employment rate ठीक चाहिए, हमें एक safe अर्थ चाहिए जहां पर क्राइम कम हो, तो गवर्नमेंट्स को ज्यादा परसेंटेज जो है वो एजुकेशन को देनी ही पड़ेगी. इट इज प्रोजेक्टेड दैट इम्पोर्टेंस इज गिवन टू रिक्रिएशन एंड स्पोर्ट्स एज वेल, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन. हम ये भी कहना चाहेंगे कि रिक्रिएशन और स्पोर्ट्स को भी इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, लेकिन एजुकेशन की फंडिंग काट के स्पोर्ट्स और रिक्रिएशन को जो है वो देनी पड़े, तो दिस इज नॉट अ गुड डिसीजन. This was your task. Any kind of questions or queries from your sides, anyone? मैम जो आपने एग्जांपल दी, ड्यूरिंग अगस्त 2015 अमेरिका हैज वेरी लेस अनएम्प्लॉयमेंट आएगा या अमेरिका हैड? मैम सर्वे तो पास्ट में हो गया. लेकिन मुझे चेक करने दीजिए. यस मैम. हाँ, हैड आएगा. यहाँ पर गलती है, हैड आएगा, बिल्कुल हैड आएगा. मैम बोथ एग्जांपल में हैड आएगा. ओके जी, दोनों में कर देंगे. और बोलिए. दैट्स इट मैम. ओके, हाँ जी मैम. आई आस्क यू वन थिंग. प्लीज बोलिए. मैम जैसे एग्री और डिसएग्री ऐसे है, जैसे एजुकेशन मोर इम्पोर्टेंट है, ऐसी कोई और ऐसे आई तो उसकी वन साइड जाना बेटर है जब टू साइड को एक्सप्लेन करना अच्छा है. देखिए, दैट डिपेंड्स फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन, पहली बात तो ठीक है. लेकिन अगर यहाँ पर टू व्हाट एक्सटेंट नहीं दिया है तो इट इज बेटर कि आप एक ही उठाएं. दोनों उठाएंगे तो आप कंफ्यूज ही होंगे. ठीक है जी. एनी अदर क्वेश्चन? यस, एनीवन? एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड? यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क.
कोई भी क्वेश्चन है किसी का तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. एज दिस इज योर लास्ट सेशन, एज पर योर ट्रेनर, I want you to clarify everything that you want to. Yes. Yes, केवल सर बोलिए. तो व्हाट एक्सटेंड में दोनों साइड. देखिए, अगर आपके पास टू व्हाट एक्सटेंड है उसमें आप दोनों साइड्स देते हैं. अग्रीमेंट भी डिसअग्रीमेंट भी उसमें आप लिखते हैं पार्शियली अग्री. अगर आपको टू व्हाट एक्सटेंड दिया ही नहीं, डू यू अग्री और डिसअग्री, सिंपली यही दिया है, तो सिंपल सी बात है, या तो ये उठा लो या ये उठा लो, जिसमें आप कंफर्टेबल है वो आप एक्सप्लेन कर दें. ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. टू व्हाट एक्सटेंड में हम दोनों एक्सप्लेन करते हैं. एक बॉडी पैराग्राफ में अग्री, दूसरे बॉडी पैराग्राफ में डिसअग्री. उसमें कंपलसरी होता है ना? अ काइंड ऑफ कंपलसरी होता है. बाकी दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन. आपको कैसा आया है, सोशल इशू पे है, सिंपल है, साइकोलॉजिकल इशू पे है, कैसा क्वेश्चन? मैम जैसे गिव योर ओपिनियन ऐसे होता है कोई भी टॉपिक का, डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिक का, तो उसमें कैसे हमें प्लीज एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या क्या देना चाहिए? जैसे ओपिनियन किसी चीज का पूछा है, उसमें आपको सिर्फ अपने अकॉर्डिंग इन माय पॉइंट ऑफ व्यू करके आप अपना एक्सपीरियंस दे सकती हैं, अपनी एग्जाम्पल दे सकती हैं. आप कोई पर्सनलाइज्ड एग्जाम्पल भी दे सकती हैं इसमें आइल करके, या उसमें कैसे भी. जी बोलिए मैम. 2 BP में ही देनी चाहिए ओपिनियन, मतलब सेकंड BP में वही बात. देखो सिमरजीत, क्या है कि 3 BP तो हमें बनाने ही नहीं है, ये सोच लो. ठीक है जी मैम. कोशिश करो कि 2 BPs में आपकी बात जो है वो कंप्लीट हो जाए. जहां पर आपको स्टेटमेंट में पूछे ही 3 क्वेश्चंस दिए हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ओनली, तब आपको तीन क्वेश्चंस अलग अलग को एक्सप्लेन करने के लिए 3 BPs बनाने पड़ेंगे. अदरवाइज हम जो है वो 2 BPs में ही अपना काम खत्म कर देंगे. ठीक है. ओके मैम. जी. एनी अदर क्वेश्चन एनीवन? Any other questions from your sides, anyone? No. Okay. Okay. So, this is the end from my side, everyone. The session was by Bhavna Verma, your trainer. Now we are going to वाइंड अप आवर सेशन. कोई क्वेश्चन और है किसी का? कोई किसी को कुछ आइल्स के रिलेटेड, कुछ लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग के साथ रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो यू आर मोस्ट वेलकम. आई एम गिविंग यू 2 more minutes. कुछ और किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी? मैम एवरीथिंग इज क्लियर. ओके, वेरी गुड. चलिए. हाँ जी 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 जी. आपसे पूछना चाहती हूँ, जो इंट्रो होती है उसको कितने वर्ड में लिखना चाहिए? मैक्सिमम 50. ओके मैम. और कंक्लूजन? 30 to 40 words. ओके, ठीक है मैम. ओके, चलिए. दिस इज द एंड ऑफ टुडेस सेशन एवरीवन. और कोई क्वेश्चन है किसी का दैट यू वांट टू आस्क मी? दिस इज द लास्ट कॉल. ओके. Okay then, take care everyone. May God bless you with your desired band scores. Okay. Okay, ma'am. Okay. Okay. Thank you. You're most welcome, everyone. Hello. Take care. Yes. Hello. Yes, Arun sir. बोलिए. Yes, ma'am. Ma'am, आज के बाद क्लासेस नहीं लगेंगी? It's last class. This was your last class of that module, जो आपका 30th April तक module था. उसके accordingly, this is the last class. और if you want to register, then you should talk to on the office number. ठीक है, आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, उनसे बात कीजिए. Okay everyone. Okay, thank you. All the very best. God bless you all.